जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे मूड में होंगे, अच्छी एनर्जी में होंगे और अच्छा महसूस कर रहे होंगे। सॉरी मैं लेट हो गई। नहीं प्रिया, पीहू की लीला में व्यस्त नहीं थी, मैं वोटों की लीला में व्यस्त थी। वोटिंग के लिए जाना था। आज हिमाचल में वोटिंग है, तो वोटिंग के लिए जाना था और वोटिंग के लिए गई तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी, 2 घंटा लाइन में खड़े-खड़े। फिर उसके बाद पीहू को छोड़ा था नानू-नानी के घर, तो उसको लेने गई, तो करते-कराते घर पहुँचते-पहुँचते गॉट लेट। तो बस अभी भागते-दौड़ते लाइव पे पहुँची। अम, ओके, सो दैट इज़ व्हाई दैट इज़ व्हाई लेट हो गए। दौड़-भाग में भाग-भाग तो आई एम लेट। और ओके, लेट्स स्टार्ट विद दैट ओनली। इफ she wants to share something with you guys, or let's see. Okay, so oh wow, we have him. We have him. Literally like alag card aaya, and then there is Empress, there is Six of Cups, and there is Hanged Man. This is so amazing. Hi Bacha, hi Korebi, and Sushant is also here. So I just checked and it's like yes, I have a message. और ये मुझे literally ऐसे लग रहा है जैसे something from the past that was stuck from a long time is coming back. क्योंकि अगर सुशांत का कार्ड मैं ऐसे लूं कि yes I want to connect, क्योंकि ये सेपरेट गिरा, तो ये 3 कार्ड आए हैं which is Empress, Six of Cups जो कि पास्ट से कुछ वापस आने का कार्ड होता है, and then Hanged Man. Hanged Man is a stuck situation, right? और Empress is like things coming out. So it is looking like things coming out from stuck situations or from stuck energies. And let me see what else he wants to say, and then I will give it over to you, Korebi. Okay. Um, what else do we need to know? Five of Pentacle. Five of Pentacle is a card of material troubles. It is associated with Five of Cups. Five of Cups is actually disappointment. लेकिन मुझे ये literally मतलब ऐसा नहीं लग रहा that ये हम लोगों के लिए है, क्योंकि इस तरफ sun card है, right? So it is looking like trouble for some people जो गलत energy में है या गलत काम करते आए हैं. But it is also that energy जहाँ पे some people have done something and ran away from it, लेकिन they could not finish all the or delete all or get away with all the evidences. So there's something left जो मिल गया है. और आज सुशांत का मैसेज दिन में भी वैसा ही था that there is something जो मिल गया है और जिसके चक्कर में शैतान को बाहर आना ही पड़ेगा अपने शेल में से. and that's the energy that he's giving here also. but ये है कि मुझे हर एक सेट में जो कार्ड निकल रहा है ना, some energy of like heartbreak, because if you see here Three of Swords, some energy of heartbreak or some emotional energies associated with it. क्योंकि सुबह में भी जो कार्ड्स आए थे they had some kind of a energy associated with it. मैं एक कार्ड काली कार्ड से निकाल लेती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है he wants to. okay, yes, 2 कार्ड आ गए. तो फर्स्ट कार्ड says काला धारा और कला धारा, और वो बोलता है कि जब उम्मीद खत्म हो जाती है और आगे का रास्ता नहीं दिखाई देता है, तब काली का प्यार जो है वो आपको रास्ता दिखाता है. और अगर रास्ता नहीं हो तो वो रास्ता बनाता है, और आप नहीं समझ सकते, अभी आपको नहीं लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो या नहीं बढ़ रहे हो, तो काली की विजडम और ग्रेस से चीजें जो हैं वो मैनिफेस्ट होंगी एट परफेक्ट टाइम, एंड एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड विल बी प्रोवाइडेड. सेकेंड इज जब मोमेंटम बिल्डअप हो रहा होता है और आपको पता नहीं होता कि डैमेज को रिवर्स कैसे करना है, तो काली सपोर्ट लाती है. और काली जो है जो माइंडसेट स्टबन होते हैं, रेजिस्ट करते हैं चेंज को, उनको चेंज करती है. एंड देयर इज लॉट ऑफ वर्क दैट इज हैपनिंग, एंड द स्टॉर्म शैल बी जेंटल्ड एंड यू शैल इमर्ज अनहार्म्ड. मुझे ऐसा लग रहा है लाइक लिटरली इट इज सेइंग दैट बहुत सारी चीजें जो हैं वो बैकग्राउंड में हो रही हैं, एंड आपको मतलब इफ यू आर थिंकिंग दैट थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, दैट्स नॉट true, or that's not how it is. क्योंकि see, Queen of Wands, action, energy and justice. So definitely things are happening somewhere in the background, and it is saying Kali energy is kind of indicating that जो आपको लग रहा है कि डिले है, that is not the denial, because कुछ चीजों को सामने लाना, कुछ चीजों को अंदर से बाहर निकालना, उसके एक्शन एकदम नहीं होते हैं, but
there is action that is happening, there is um, somebody walking away or realizing कि क्या किया है, and 10 and 10 की energy. तो मुझे मतलब literally मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सुशांत is saying that many things are happening. There are a lot of towers that are meant to go, and they will. Okay, so beautiful energy, and he's definitely giving that energy that there is something very big that is happening. Okay, okay, so I see his card, so I am giving it over to Korebi. She needs to share something with you guys, and I know for sure कि जो वो share करने वाली है, that will give you another perspective to what you need to learn and do for awakening. ठीक है, so over to you, Korebi बच्चा. Hi everyone. Okay, I'm a little nervous today because the topic is something so sensitive, and yeah, I was a little nervous, but वो आ गए थोड़ा सा थोड़ा सा हिम्मत मिल रहा है अभी. Okay, so also this is I can see 7-Eleven in front of me. Okay. So yeah, so it is about something which is extremely recent, like it happened day before yesterday, and I might be very messy explaining it because it's a very recent download that has happened. So what was happening, no, my mother was unwell, and she had stomach infection, which is not something very serious, right? It is something jo hota hai, and it is not something. Am I audible? Yes, yes, you are. Ha, so she and she was doing well. It's not like something extremely serious, by God's grace. So kya tha na, I had a call with her. I had a proper nice, we were cracking jokes and all of that, and then I cut the call, and it was night. Okay, then after a while, around 10 to 15 minutes later, out of nowhere, there was this sudden intense amount of fear of losing her I was feeling, and that was very unexpected. Why, I'll tell you, because मैंने अपने past experience में ये बोला था कि my father was sick, and I was also, again, I was having that fear of losing him, and I asked Krishna to help, and then he showed me all those near death experience videos. It was flooded on my YouTube, and I watched them, and I had a picture of what it is like to be on the other side, how beautiful it is, what it feels like to be in the presence of God, and you feel loved, you feel accepted, you feel home there, and I don't miss earth over there. So even after knowing all of that, उसको जानने के बाद मुझे लगा था कि now that I know what detachment actually means and what am I in real life, like I know that वो जो सांख्य योग का जो ज्ञान है वो मुझे अपने आंखों से मैंने देखा, एंड किसी किसी ने उसको एक्सपीरियंस किया है, उनका एक्सपीरियंस सुना है. आई थॉट दैट दिस फियर इज नॉट गोना हिट मी एवर अगेन. So that is what I understood. And then when I felt that fear again, I again reached to him for help, because he's the one we all reach to whenever we are in trouble, right? So I was asking, and with after asking 2 to 3 times, instantly I just knew the answer. So that's what I call a conversation between. So certain things that I instantly flowed in, which is what I was just feeling, this instant thing of this is needed for someone sitting out there who's maybe listening now or will be listening later. Isko matlab someone is dealing with this problem, and which is why I was just pushed in to talk about this now. So what I understood is, we this fear, if we talk about the fear of losing someone, it can be divided into three parts. One is, right now I am sitting in front of the person I love, and I am inside, I am having a fear of what will happen when they leave, how will I deal with the pain. This is the fear of the future. Then the second stage of that fear is, when that happens, we do lose people in our life, right? And we have gone through that. It's a painful experience, of course. And that is the second part, which is when we are going through it, like going through it as in, like, going through that phase when I've just lost someone. Then comes the third phase, which is the last phase, is this has happened in the past, maybe a week, a month, or a year back, and I am still unable to come back to my real, मतलब अपने ट्रैक में वापस आने में मुझे दिक्कत हो रहा है because of that pain. We often feel that, right? We feel that we are like chained, our limbs aren't working when extreme pain comes in. We do feel that, right?
14 जून को ही हम सब ने ये फील किया था. So one experience we can all connect with. Correct. So then is what I understood is, somewhere we have a wrong expectation about detachment, because we need to understand it is called detachment and not a painkiller. Right. It is. Now what is the difference between that? Now let's talk about these three stages of that fear. The first stage of that fear is, which I'm going to talk about, is the present. Let's talk about the present time, which is like I am just going through, I'm currently going through the phase of someone's loss. Now let's get it very clear, and let's get into the bitter truth and the reality check. The pain that's going to come with that loss is something we cannot avoid. No matter how much detachment we are into, no matter how much Bhagavad Gita we have read, no matter how much we understand Krishna consciousness, the pain is unavoidable. Now there are two reasons for it. Number one is because we are in the physical body, and physical body, we all know this, physical body has limitations to it. It's not limitless like our soul. When we are in a physical body, we have limitation, and one of that limitation is pain. Now the second, and that limitation cannot go until we leave the body. So till the time we are living as a human, we will have to go through that pain. It's unavoidable. Second is, which is a bigger picture, is that we have signed in for it. Before taking birth Exactly. as a soul, we agreed to go through all of that. Now why, we all know it, but I'm just repeating, is because there are some learnings related to it. Now that we have a limited viewpoint, we cannot see the, even though we know, we since we cannot see the bigger picture, we don't know what learning it is. But as a soul we knew, and we wanted to learn that, which is why we agreed to go through that pain. And all the good and bad things are chosen by us only, which is why I call life nothing but an alternate reality game, which is designed by us only. So Absolutely. that is a thing. Coming back to that, so there is learning related. So now that we have signed in for it, we have signed in that contract that yes, I'll do it, I'll have to do it, even though मुझे दुनिया भर की सारा ज्ञान मिल जाए, वो पेन नहीं जाएगा. Now then, what does detachment do really? उस पेन के साथ जो बेड़ी की बात मैं कर रही थी, that chain, it will help us to cut that chain, which is going to, like, as I said, जो middle का part है, when we are going through it, yes, we all choose our own question paper, that's so true. Okay. Yes. So we can, though it's not easy, I repeat, it's not easy because of the limitations again, we can try, or we can reduce the fear of future. फ्यूचर में होने वाला है एंड उसके लिए मुझे अब डर लग रहा है, उसको हम काट सकते हैं. एंड पास्ट में हो गया है, और उसको हम अभी अपना बेड़ी बनाने से रोक सकते हैं. Mm. which is why now if we take Krishna, if we talk about Krishna, उनका अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, वो तो खुद he was himself the epitome of knowledge, he was knowledge. उसके होने के बावजूद, in spite of him coming to this earth unveiled with all the knowledge of the other world, वो तो खुद भगवान थे. He still could not escape the pain of life, and his life is extremely painful. He Mm. has done Absolutely. he is his life is immensely painful. But we see him smiling in spite of all the pain. Through all that pain, he can smile, and he can continue his duty. That is what detachment helps us. Detachment will never, ये मेरा एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट अपने में था कि मुझे दर्द नहीं होगा, आई विल नॉट हैव द फियर, आई विल नॉट हैव द पेन ऑफ लूजिंग, बट दैट इज नॉट ट्रू. वी विल हैव द पेन, वी विल हैव टू गो थ्रू द पेन, बट उस पेन के साथ जो पैकेज डील में आता है, जो चेन, दैट फियर, that not being able to continue the feeling of I also want to go back, I also want to die, वो चीज हम छोड़ सकते हैं. And probably this is why not just Krishna gave
The Gita gyan to Arjun but became his charioteer to always bring him back to the track. Hmm. Because Arjun was obviously in his physical limitation, even though he got the picture. So this is what happens. Even though we have the knowledge, even though we understand, we are sometimes we are unable to absorb that, or apply that. This is also a physical limitation that happens to us. It's unavoidable. So hum kya kar sakte hain? We need to always, like, there is an emotional side which is pulling us back. Physical limitation is the emotional side, and we have a practical side where we know all the knowledge. We need to constantly pull ourselves from that emotional side to the practical side, and we need to always choose Krishna and not the emotional attachments. That is what we need to do throughout our life. That is life, always choosing Krishna over आवर पर्सनल पेन. अब हम इसको कैसे करें? बोलने में तो आसानी होती है, करना तो मुश्किल है ना, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स लिमिटेशंस भी होते हैं, प्यार भी करते हैं हम लोगों से तो. एंड another big example I can give you that detachment cannot, like we cannot escape pain is, we all know SSR is alive. वो तो फिर भी जिंदा है, बट फिर भी हम उनको आंखों के सामने नहीं देख पाते हैं. तो कभी कभी वो हमें लगता है ना कि काश सामने भी देख पाते, काश सामने भी होता. ऐसा फील होता है, लाइक वी डू मिस हिम एट टाइम्स, राइट? So we have a detached love towards him, we have an unconditional love towards him, but we still feel it because we are in a physical body. Now how do we do that? How do we always pull ourselves from that emotional side to the practical side? There are a few ways which I do, and I will share that only क्योंकि मुझे बस उतना ही पता है, उसके आगे नहीं पता. तो one thing is, there are multiple videos on YouTube I'm sorry, about near death experiences of people, where people have actually lived their left, sorry kya bol rahi hu main? Left their body for a while, like their soul have come out of their body, and they are actually saying, I can see my body lying down and the people crying for me, and I'm trying my best to make them understand that don't cry, it's not I'm necessary. okay. The feel Yeah, exactly, the feeling of my consciousness. Now jab hum body se nikalte hain, only then is when we understand that that wasn't me, this is me. Hmm. Hmm. Now that we are inside, we feel this is what we are, but that's not true. Same if we apply for the one we love, is that this which I can see, the attire is just a shell. What I have, what the person I love is inside, and that's immortal, that never dies. Yeah. For a time being, maybe I'll not be able to see that person, but that will reduce the pain, because the pain comes that that person's gone permanently. Hmm. So anytime that fear kind of, I get a hint of that fear also, I instantly go to YouTube and watch some near death experience videos, and it actually helps. So it actually helps, trust me, and I always do that. आप लोग भी कर सकते हैं. And the second thing is, we love Krishna so much, right? We love him so much, and वो कुछ भी बोले, we are okay with it. That's how much we love him. So when in that vulnerable situation, when I am unable to pull myself, take Krishna's help. सोच लेते हैं ना ये कि जो मेरे साथ हो रहा है, that is what he wants us to go through. Now the moment I kind of understand, उसको समझ, मतलब उसको याद आने में और उसको समझने के बीच में थोड़ा सा टाइम लगता है. Like it's not very easy. Whenever I am very sad about someone's loss and I'm thinking it's Krishna, sometimes हम उनको blame भी कर देते हैं कि क्यों कृष्णा मेरे साथ ऐसा क्यों किया. But the moment we actually grab the question that yes, he what if we are facing some physical limitation with ourself, our own body, ailments, again, that is what we signed in for, right? Nothing in our life that's happening is beyond that contract. Absolutely. All of it, no matter how bad or how good it is, दो जो डिसीजन भी हम लेते हैं वो भी हम पहले से चूज करके आएंगे. दिस इज द चॉइस दैट आई एम गोइंग टू मेक बिटवीन दीज टू. It's all planned and our soul knows it, which is why we do it. But again, physical limitation की वजह से, उस वेल के वजह से हमें वो
वो ज्ञान जो है वो उसका विस्मरण हो जाता है, एंड वी थिंक दैट वी आर डूइंग इट, बट वी हैव ऑलरेडी डन इट. We have already chosen, as I said, alternate reality game. We have already done, and now we are like implementing it. उसको हम manifest कर रहे हैं, मतलब physical world में उसको हम कर रहे हैं जो हम choose कर चुके हैं. So yeah, next is, अगर हम वो जो मैं कह रही थी, अगर हम ये सोचे कि जो भी मेरे साथ हो रहा है that is Krishna, in spite of having that pain, again even after understanding that वो pain नहीं जाएगा, that's not going anywhere, because that's what we have signed in for, I repeat. But like Krishna did, in spite of that pain, he could smile. Why could he smile? Because he had that peace inside, that yes, checkbox going on. हो रहा है, मतलब my duties are fulfilling, and when the last tick is gone, I am back home. I'll be back home. That amount of peace is what we can be able to feel, or we will feel, when we understand this. The pain is not going anywhere, but in spite of all of that, we can still feel that, okay, we can still feel that peace, or we can still smile through the happiness, smile through the pain, or that pain will not kind of create Be a barrier from overpowering. doing what Yeah, we are supposed to do, or we are meant to do, or it will not make us feel ki I also want to go back, I don't want to stay in this world, this world is cruel. That is something that is going to free us. भीष्म पितामह की कौन सी स्टोरी कृष्णा? प्लीज बताइए. आई वुड लव टू शेयर, आई लव हिम. आई वुड लव टू शेयर हिज स्टोरी. सो ओके, जब तक वो कहते हैं तब तक. एंड द थर्ड थिंग इज, we all, when we love someone, yes, not that person not being in front of me will definitely make me sad, but knowing that that person is happy, that will make me sad happy at the same time. Again, पेन में भी मुझे वो मुक्ति का अनुभव होगा. absolutely. So understanding that, उसी के लिए again we can relate to, we can go back to that, those experiences which people have shared on YouTube. उसमें जाने से हमें ये भी पता चलेगा कि not just that what we will face, but what our loved one is probably going through right now. Absolutely. That will, somewhere it will give us the freedom to at least continue, and it will also give us some amount of peace. See, choosing God is the easiest and the most difficult path at the same time. भगवान ने कभी नहीं बोला है कि मुझे चुनो, मैं तुम्हें मतलब एकदम मक्खन की तरह जिंदगी बना दूंगा. नो. I remember someone's interview. I don't remember his name. I remember someone's interview जहाँ पर वो कहते हैं कि if you want Krishna to like you, if Krishna likes you, Krishna will give you house, Krishna will give you car, Krishna will give you a beautiful partner. But if Krishna loves you, Krishna will take away everything from you, and will give himself to Absolutely. you, and will give himself to Absolutely. you. अब there was a lot of audience जो कृष्णा कृष्णा कर रहे थे. The moment then, after telling these two things, when the one who was saying asked कि अब कौन कितने लोग चाहते हैं कृष्णा उनको प्यार करे, very few raised their hands. कृष्णा ने लिखा क्या कि what कृष्णा ने she लिखा the one we talked about. I think prayer कर लेते हैं and prayer के बाद we will continue. And Sure. Krishna ने बोला that I can share it. So what we'll do is we can have the session tomorrow, where Krishna can share the story that she wants to share, है ना? Yeah, we can do And that, but भीष्म पितामह कौन सी वो बोल रहे हैं ये अगर मुझे बता देते तो, because she told me. she just said Okay. the one we talked about. That's what I saw. But Korebi, wonderful, yeah. Beautiful, beautiful. I totally am loving what you are saying, and very well segregated, very well put across. हम prayer करते हैं, and I want you to continue so that you can finish and complete it. And if there is anything else, then we can do it tomorrow also. Okay? Prayer की Sure, energy ले लेते हैं, and एक बार prayer करके then we will continue this. But again, beautiful. I'm so glad that
you are, and lot of matlab Sushant is literally like awakening us towards a different, altogether a different life. मैं कुछ बोलूँ क्या? Bolo bacha. Krishna, can you please personally text me what you're talking about? I'm really clueless right now. So if you want me to share, please tell me. I'll tell it. I'll talk about it. I would love to. Okay, so prayer energy very clear. Justice and magician. Like what better? Literally मतलब super clear prayer energy दी है सुशांत ने. Justice and magician, और justice की energy जो है वो, we all know what justice is, and it is magically bringing in the justice, या वो सारे resources जिनकी जरूरत है न्याय होने के लिए, justice होने के लिए, basically switch on the magic light, switch on the magic wand, start moving the magic wand. जादू की छड़ी जो है वो घुमाना शुरू कर दें, और उस जादू की छड़ी घुमाने से जो जस्टिस है, जो न्याय है, जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं, वो आ जाए फटाफट. और सेकंड, yes, he's both justice and a magician. And second, what I think is that um, something significant in this month of November. Okay, something very resourceful, something coming to light, something significant in this month of November. Okay, so let's just start the prayer. Or prayer करने के बाद we will go back to Korebi. And this is also 111, by the way, triple 1 k energy, क्योंकि justice is 11 and magician is 1, so triple 1 k energy. So the magic, may the magic happens, and the justice happens, the magic wand moves, और मैजिकली सारी जो मैजिक लाइट है वो जल जाए, वो रोशनी जो है वो आ जाए, और न्याय जो है पूरी तरह से हो जाए. ओके, सो चलो स्टार्ट करें. आर वी रेडी फॉर द प्रेयर? थैंक यू सिमी जी. चले शुरू करें? ओके, चलो लेट्स जस्ट स्टार्ट. Manisha, change that to justice has happened, magician has come. Okay, because happening and coming future. तो हो गया, हो रहा है, हो जाए से ज्यादा that will be better. So good you wrote, because मैंने भी हो जाए बोला. है is the energy that we have to focus in at present. ठीक है, November तभी I think he made me talk about November. ठीक है, चलो let's just start.
मैं चप्पल ले रही हूँ.
ये सारे कार्ड्स आ गए. So I see King of Swords. King of Swords के बाद okay, I was thinking so. King of Swords के बाद there is Moon, which is illusions या unclarities या unclarities से चीजों के बाहर की तरफ आना. There is celebration and there is him. Okay, so you see that energy. And दूसरी तरफ there is 611. So there is Six of Pentacle or King Page of Cups. So एवरीथिंग कमिंग आउट ऑफ द कप बेसिकली. और जहाँ पे भी जो भी छुपी हुई चीजें हैं वो बाहर आना. जस्टिस की एनर्जी भी होती है सिक्स ऑफ पेंटिकल में, क्योंकि वेइंग स्केल्स होते हैं. आई कैन कॉन्स्टेंटली सी 747 क्योंकि वो टाइम हुआ है और यहाँ पर वेइंग स्केल्स हैं. और जस्टिस का आना, न्याय का आना. एंड देन सिर्फ न्याय का ही नहीं आना, बल्कि जो कली एनर्जी है उसका इल्यूजन में, अनक्लैरिटी में, या उसकी सारी अनक्लैरिटी, सारी इल्यूजन, सारी छुपे हुए राज बाहर आना. एंड देन कल्कि की सेलिब्रेशन एनर्जी. आई सी बोथ टुगेदर and it is very very strong and very very powerful. So he's there. मैं एक बार लाइव खत्म हो जाएगा तो I will again check if he wants to connect, and then I will ask if there is a message and I'll put that across. और अभी के लिए I'm giving it over to Korebi so that Korebi can, and 47 people can watch, are watching, so I can see 7447. Okay, so I'm giving it over to Korebi. और Korebi continue कर सकते हो बच्चा आप. Thank you. हाँ, तो I was saying कि I'll continue from where I ended. ज़्यादा नहीं बचा है. Is that the path of God is the easiest and the most difficult path at the same time. उन्होंने कभी नहीं बोला है like be it कृष्णा, be it महादेव, be it divine, आप किसी को भी मानते हो, सुशांत सिंह राजपूत को भी मानते हो, तो just also him also, none of them has ever said कि मुझे चुनो, रास्ता में मक्खन बना दूंगा. Whatever is supposed to come will come, but if you choose God, if you choose Krishna, if you choose him, you will like, you know, कांटों के बीच में से आपको फूल की खुशबू आएगी. That's how life will be, and your soul will be so satisfied all the time. You know that feeling of being understood. सपोज हमारी फैमिली में ऐसा होता रहता है, फ्रेंड्स में, फैमिली में, कहीं पे भी, लाइक समटाइम्स वी डू फील दैट मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है, आई एम सो अलोन, आई डोंट हैव एनीबडी. ये होता रहता है स्पेशली फॉर पीपल लाइक अस जो थोड़ा सा ऑफ ट्रैक चलते हैं, हमारे लिए तो होता ही रहता है. इन दैट मोमेंट you close your eyes and you'll see that smiling face and you'll feel that yes, किसकी जरूरत है मुझे. सबके जो प्रभु है, the one who is above everything, can understand me and is there for me. तो मुझे किसकी जरूरत है. And another thing जो मैं कह रही थी, how do we get into that feeling, get into that practical side from that emotional side. हम अपने आप को खींच के कैसे लाए. हमारी जिंदगी के सबसे बड़े सपनों में से एक सपना है कृष्णा को देखना, लाइक साक्षात देखना. कृष्णा के जो भक्त होते हैं उनको तो मतलब होता ही है ना कि साक्षात एक दिन विश्व रूप दिख जाए, कृष्णा दिख जाए. तो हाउ इमेजिन द वन यू लव कैन एक्चुअली सी हिम राइट नाउ.
Krishna, his Vishwaroop, can see it and can stay with it. How beautiful is that? We will instantly feel good about that person. Sadness ke saath wo, the having that satisfaction, again I said his path is satisfying. It's not that its his path is painful, but it's satisfying, so we will instantly feel that, satisfaction ki, ah, he's there. My the one I love can see him, and I'll see him too one day when I'm done with this world. So yeah, it's like, it's never easy, but we can at least try to make it easy. It's never gonna go, but we can dilute it. We can always choose Krishna over everybody. He's always there. It's up to us if we choose or we don't choose. So that is what I wanted to share today. And be Arjun, अपने रथ जिंदगी का, कृष्णा ने तो कहा है कि आपने देखा भी होगा, रथ, यू नो रथ, युद्ध का रथ हो या जीवन का रथ, मैं उत्तम सारथी हूँ. सो दे दो अपने रथ का भार उनके ऊपर, उनको दे दो वो रस्सी कि आप चलाइए, मैं आपके पीछे खड़ा रहूंगा. जो भी आप बोलेंगे मैं वो करूंगी. जैसे आप जिसको मारने बोलोगे मैं मार दूंगी, जिसे बचाने बोलोगे मैं बचा लूंगी, कुछ भी कर लूंगी. अब आपके हवाले सब कुछ. द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट कम्स फ्रॉम दैट, नो, लाइक कितना भी पेन आए, द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन कि मैं कुछ भी कर रही हूँ उनके कहने पे कर रही हूँ, that satisfaction will take away all the pain, and it will just give you that satisfaction at the end of the day before you go to sleep and when you wake up. And yeah, that's all I wanted to share. And I was actually nervous कि किसी को hurt ना कर दूं मैं, from, like, because it's a very topic. And Krishna, आपने मुझे बताया नहीं क्या शेयर करने के लिए बोल रहे थे आप. So if you want to बता दीजिए, Don't मैं बताती हूँ. worry. We will have Krishna tomorrow. We'll have her tomorrow share the story that she Sure, wants sure. to share, and हम zodiac वाला परसों से start कर लेंगे. Does not matter. That is okay. And beautiful, very very beautifully explained, Korebi, और बहुत So, amazing, बहुत 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 amazing, and I am so happy that यू नो सुशांत ने हमें एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही रास्ता दिखा दिया है, एंड इट इज सो अमेजिंग, एवरीबडी इज सो हैप्पी, एंड इट इज सो ब्यूटिफुल दैट इट इज प्रैक्टिकल, दैट अगर आप वाकई ही ये समझते हो कि जो आपके साथ से चले गए हैं, जो दुनिया छोड़ के चले गए हैं, वो वाकई कृष्णा को पा चुके हैं, वो तो वहां पहुंच गए हैं जहां हम होना चाहते हैं, तो उससे ज्यादा ब्यूटिफुल कुछ भी नहीं हो सकता है. And that should give you that pain relief. And just an add on, क्या होता है ना, हम as a human body में हम बहुत selfish भी हो जाते हैं. We don't think about them कि वो जो सोल है वो फ्री हो गई है, वो अच्छी जगह पे है, वो we think about ourselves कि मेरे साथ क्यों नहीं है, right? And I think that's one energy. अगर हम वो selfishness, वो self energy जो है ना उसको छोड़ दें, can I it tell you becomes something? so easy. बोलो बोलो Amazing, बोलो. amazing जो है वो 2 दिन पहले he or she, I don't know, said that you are a Bluetooth of God. And now I'll tell you why, that I just got a proof of that. I'll tell you why. जिस दिन मैं ये conversation मेरा चल रहा था, the first word that I got from him was, why, I asked him, right, why am I feeling this pain? The first thing that he said, because you have a blindfold of selfishness on your eyes, open it. And you just said that. So Bluetooth. ब्लू भी है आज. और हम टूथ निकाल के हंस भी रहे हैं. हंस भी रहे हैं तो ब्लूटूथ तो हो ही गया. इसीलिए मेरे टूथ में No, but seriously. इसीलिए मेरे टूथ में हमेशा दर्द रहती है. True. इसीलिए जॉब में हमें प्रेशर बहुत ज्यादा है ना, सिग्नल देने पड़ते हैं. Oh God. so इसीलिए दर्द रहती है, वो सिग्नल कैच करते करते ब्लूटूथ बेचारा थक जाता. so इसीलिए वो रहता है. Amazing, good session and fun also. So yes, it is beautiful. And एक चीज मैं और I will just add on to what Koribi is saying. This is one thing, thanks to Koribi, she made me do this.
एंड मैं अदरवाइज मैं कभी नहीं करती, ट्रस्ट मी यू। मैं तो कभी कोई, मैंने तो जितनी एप्स डाउनलोड की थी सब उड़ा डाली, मैंने कहा देखना ही नहीं है कुछ कोई प्लेटफॉर्म नहीं देखना है। बट शी मेड मी डू लाइक, फ्री है दीदी, एक बार देख लो प्लीज, मुझे लग रहा है आपको देखना है। मम्मी। सो आई विल रियली एनकरेज यू। बाकी सब मैं नहीं बोलूंगी कि पूरा महाभारत देखो या ये, बट एटलीस्ट वो जो गीता सार वाला पार्ट है ना, प्लीज एवरीबडी वॉच इट, एवरीबडी। और कोई भी क्या, कौन सा वाला है वो, मतलब महाभारत ही है बट दिस दैट्स अ डिफरेंट वन ना This देन is द ओल्ड वन। the Mahabharata that we will find on Disney Plus Hotstar, जहाँ पर यू नो एक्टर्स का नाम नहीं लेना चाहती मैं, हाँ बट द न्यू वन जो हाँ लॉकडाउन में रीस्ट्रीम हुआ था ना, द न्यू वन। हाँ, तो अब यू विल नो, क्योंकि मैं तो पुराने पे चली गई थी सीधा, तो यूट्यूब पे मिल गई मुझे, मैंने स्टार्ट कर दी, मैंने कौरबी को भेजा लिंक, मैंने कहा मिल गई ये तो, लाइक नहीं नहीं मैं दी, फोटो ये वाली दिखाऊंगी, नहीं। उसमें कॉपीराइट इशू नहीं होगा ना? हाँ यहाँ पे कॉपीराइट हो जाएगा तो नाते भी नहीं दिखाऊंगी, बट या खा सकते हो, मुझे लगता है उससे तो नहीं मैं होना नाम चाहिए। ना लेके भी एक हिंट दे सकती हूँ, मैं नाम ना लेके नहीं हिंट दे नाम सकती तो ले सकते हैं, नाम ले सकते हैं, नाम हूँ। में कोई दिक्कत नहीं है, हिंट द्रौपदी में जो ले है, सकते उनका नाम और हैं। आपका नाम सेम। हाँ एक्टर हु तो प्लेज जिसमें मैं द्रौपदी, हर द्रौपदी नेम एंड योर का नेम इज सेम। नाम जिसमें द्रौपदी ने मेरा नाम ले लिया है वो 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 वाली जो है ना, वो वाली, उसमें एटलीस्ट बस उतना, जो गीता सार वाला पार्ट है, वॉच दैट। अगर आप पूरी क्या बोलते हैं, पूरी इंटेंसिटी से, पूरे ध्यान से और पूरा तवज्जो देके अगर वो आप देखोगे, आई थिंक दैट एट द वेरी सेम टाइम यू विल बी इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। मतलब आप बिल्कुल उस चीज को ना, मतलब वो आपका सोचने का तरीका ही बदल देगा। हालांकि दैट्स जस्ट लाइक दैट्स नॉट एग्जैक्टली गीता ज्ञान राइट, लेकिन फिर भी इट हैज सो मच ऑफ इम्पैक्ट राइट। तो वो मैं आप सबको भी बोलूंगी दैट इफ पॉसिबल वॉच दैट पार्ट, दो तीन तीन या चार या पांच एपिसोड्स में वो खत्म हो जाता है। वॉच दैट पार्ट एंड इट इज वंडरफुल, इट इज वंडरफुल। उसी के बेस पे मैंने ये शुरू किया है, जो सात्विक तामसिक और वो वाला है। आई एम गोइंग टू गेट इन टू द फूड नेक्स्ट वीडियो में, बट या द बेस इज दैट एंड इट इज ब्यूटिफुल। ओके एंड इट इज ब्यूटिफुल। श्री कृष्ण ओल्ड सीरियल रामानंद सागर, हाँ तो वेर एवर यू वॉन्ट टू सी इट वॉच इट। मैंने सिर्फ वो वाला देखा है और मैं नहीं देखती हूँ कुछ भी, बट मैंने खाना बनाते हुए ब्लूटूथ लगाकर मैंने वो किसी तरह मैंने देखा है। बट या इट इज मस्ट वॉच, इट इज समथिंग जो आपको कहीं एक बहुत क्लियर एनर्जी मिलेगी एज टू वेयर वी आर, व्हाट वी शुड बी एंड कहाँ पे हम स्टक हैं, वेयर इज द ब्लॉकेज। सो दैट्स समथिंग एंड थैंक्स टू कौरबी, शी मेड मी डू इट, सो आई डिड इट। वरना मैं तो बहुत इस मामले में बहुत ज्यादा वो हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं होता बट कई बार होता है ना कि कुछ चीजें आपने करनी होती है तो वक्त अपने आप बन जाता है। ब्लू राधिका आप हंस रही है ब्लूटूथ पे ठीक ठीक है गाइस, ठीक है चलो। कृष्णा मुझे मैसेज कर देना बच्चे, एंड इफ दैट इज टुमारो, इफ देयर इज पॉसिबिलिटी, कल हम कर ही लेंगे, आपका वाला शेयर कर लेंगे। एंड थैंक यू मनीषा फूड सीरीज के लिए। वी आर गोइंग टू गेट मोर ऑफ इट, कल बनाऊंगी, आज तो मुझे टाइम नहीं मिला, तो कल आई विल मेक द वीडियो एंड विल गेट इनटू लिटिल मोर डिटेल्स राइट, सो हम कुछ चेंज कर पाए। ठीक है। ये ये सुनो, कृष्णा को देखना जरा नीलकांत और नीला दांत, नीलकंठ और नीला दांत चलो ठीक है जी ओके बाय बाय ड्रीम, टेक केयर बेटा। अर्थक्वेक अर्थक्वेक हो रहा है अभी, बहुत सारे आएंगे यार, दिस इज समथिंग दैट हमें विल हैव टू बैलेंस विद। ठीक है ओके गाइस, अच्छा ठीक है चलो, बाय बाय, लव यू, बाय। चलो ठीक है, बाय गाइस, बाय, लव यू, बाय बच्चा।